Hello everyone, good afternoon and welcome to exampur. Today we are here to discuss the syllabus of the GS paper 1 and the section of the geography. I will teach you the section of the geography, environment and ecology section, and the geography is given in the UPSC syllabus, UPSC main syllabus in the paper 1. Okay, as you know there are 4 general studies paper. Paper number GS paper 1, which consists the history, geography and Indian society. Second paper of the general studies, which mainly consists the Indian polity, international relations and the governance. GS paper 3, in this paper there are 3 major sections. First one is the Indian economy. Second is the science and technology section. And the last one is environment and ecology. And one section is more, that is the disaster management. Okay. So paper 3 consists of these scientific subjects: Indian economy, science and technology, environment and ecology, and disaster management. GS paper 4, which is completely dedicated to the ethics section, and this ethics section is first time introduced in the UPSC mains since 2013. In 2013 it was introduced because in 2013 the main syllabus has been changed. Okay, so there are 4 papers of the general studies. Each consists the 250 marks. Each paper consists the maximum marks 250. That means total number of, or the total marks for the GS is 1000 marks. Okay, so I will deal the geography section, I will deal the environment and ecology section and disaster management section. So today we are going to discuss the paper 1 geography section. What is the syllabus of the geography in paper 1? Okay, so syllabus is very important for the preparation. If you are clear in the syllabus, then there is no any hurdles, there is no any hurdle can create, no any obstacle can stop you for your success. Okay, so आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए. सिलेबस क्या होता है, क्या क्या कैसे होता है, कितने कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये सारी चीजें आपको पास में आइडिया होना चाहिए. देखो, अगर हम लोग ज्योग्राफी को डिवाइड करें, ज्योग्राफी जो सिलेबस है हमारा, जो यूपीएससी का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग की बात करते हैं अगर हम लोग, तो मेन सिलेबस में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है. इसमें हमारे में जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, यानी पहला पॉइंट जो दिया गया है वो क्या दिया गया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी मींस कि आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी एंड द बायोजियोग्राफी. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का सेंस यहां पर क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है कि आपको, अगर हम लोग ज्योग्राफी को डिवाइड करें या ज्योग्राफी के सेक्शन को देखें, तो ज्योग्राफी के सेक्शन को आप यू कैन डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द फिजिकल ज्योग्राफी एंड द सेकंड वन इज द ह्यूमन ज्योग्राफी. Physical geography and the second one is the human geography. Human geography. Physical geography further can be divided into the some sections. First one is the geomorphology. That means in this section you will study the geomorphological structure of the earth, how these different geomorphological structure has been evolved, how it is developed or how it is destroyed. ठीक है, तो डिफरेंट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी. सेकंड सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी इज ऑल
all related to the climates or the atmosphere. Okay, we study the atmospheric condition in the climatology. Third one is the oceanography. Oceanography means the geographical aspect which is related to the oceans. We will cover the in the oceanography. The last one is the biogeography. Biogeography is also the part of the physical geography. Physical geography is very important section for the prelims as well as the mains examination. So we will cover these section in the physical geography. Human geography, the main branch of the human geography. Human geography is basically divided into, in general condition, we can divide the human geography into the economic geography and the social geography. Economic geography and the social geography. Economic geography further can be divided into the agriculture, transportation, mineral and resources. These are the economic or the human geography section. Okay, both sections are important for us. Both sections are mentioned in the prelims as well as the mains. In the main section, the UPSC in the present time or the nowadays is focusing on the human geography section. So if the UPSC is focusing in the mains in the human geography section and in the prelims it is focusing on the physical geography section, that means we should study all the section equally. We should emphasize in all the section equally, because question can be asked from where, and in the mains the most of the question are coming from this section. So for us both sections are very important. तो हम लोग इसको देखेंगे, दोनों सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों सेक्शंस को हम लोगों को कवर करना है. द फर्स्ट पॉइंट, सैलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इसको आपने देखा. Distribution of the key natural resources across the world, including the South Asia and the Indian subcontinent. This is the second point. Distribution of the key resources. Key resources. Resources is the part of the human geography, or the resources is the part of the economic geography, and economic geography is the part of the human geography. So economic geography, this section, across the world. That means you should study about the resources which is distributed across the world. The major resources which are the game changer for the Indian society, or for the society or the human society. Some resources are proved themselves as the game changer, like the present time petroleum oil, natural gases, or the shale gases. They are the game changer resources for the humankind at the present time. So we should focus on the study of the natural resources which is distributed across the world. Okay, so this is the second point of the Indian geography, for the geography which is given in the GS paper 1. The next point, the factors responsible for the location of the primary, secondary and the tertiary sector industries in the various parts of the world, including the India. That means if you are going to establish an industry, then many factors are responsible to establish that particular industry at the particular region. You can say it, the placement theory, some placement theory or the some central place theory or the placement theory of the industry is given in the geography, and it is also the part of the economic geography. It is also the part of the economic geography. For the development of any nation, there is a requirement to development in the economy. There is a necessity, if you develop in the economy in the proper way, then all the aspects related to the development, like the social development, other dimension, literacy rate, or all the aspects or the dimensions will automatically increase. Okay, so economic geography, that means the next factor, what factors are responsible to establish any factory which is related, which belongs to the primary sector. What are the factors which are responsible? You should know about these factors. What factors has the effect on the secondary industry or the secondary sector industry? Which factors has the effect on the tertiary sector industries? So you should know about these factors, and you have to study in this section into the geography or in the main section. Geographical feature and their location. Change in the critical geophysical feature, including the water bodies, ice caps, and the flora and the fauna. Changing in the
geographical features. Changing means what changing is happening in the present time. What change is happening in the present time, it is very important to us to understand that changing, because if you understand that changing, then you will it will help you to formulate the policy for the next what happened. Okay, and your main function is in the system is to for policy formulation, because you will become an bureaucrat, and the main function of the bureaucracy or the main function of the any bureaucrat is the policy formulation. Okay, so it is important to us to understand. It is important to us for to understand these aspect of the geography syllabus. The last important geophysical phenomena such as the earthquake, tsunami, volcano activities, and the cyclone. This is the part of the physical geography. Okay. The next, the core areas of the geography. What are the core areas of the geography? Core area क्या है इसका? देखते हैं इसका. The physical geography is the core section. वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको देखना है यहाँ पर रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इनका सबका. इंडियन ज्योग्राफी में आप देखो जहां पर भी मेंस का सिलेबस दिया गया वहां पर इंक्लूडिंग द इंडिया बोला गया है. यानी अगर आपसे रिसोर्सेस की बात की जा रही तो रिसोर्स में अगर वर्ल्ड की बात कर दी जाती तो वर्ल्ड की बात अगर की जाती तो उसमें इंडिया इंक्लूडेड होता है. हमेशा ध्यान रखना, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का जो बेसिक डिफरेंस है, ये अभी तो हम लोग सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को कर रहे हैं. जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो बेसिक डिफरेंसेस आपको जो क्लासेस हैं उसमें मिलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी. There is no difference in the Indian geography and the world geography. Only the difference of the context of the study. ठीक है, context of the study is the difference between the Indian geography and the world geography. ठीक है, यही difference होता है, इसको आपको यहाँ पर समझना है. So this is the core section or the main part of the part. ठीक है, तो यहाँ पर देखो distribution of the key natural resources across the world including the South Asia and the world including the India. तो अब आपको अगर इसको मैं एक सिंपल वे में बताऊं तो सिंपल वे में अगर आप देखो तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे जितना भी सिलेबस में मेंशन किया गया जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है वो पूछा जाता है. इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मेनली फोकस है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे. रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है उसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है ये, और जो चेंजिंग चीजें हैं, चेंजिंग का मतलब जो चेंज हो रहा है, आइस कैप चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का बेसिक कंडीशन, इसको हमें यहां पर समझना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज द अर्थक्वेक, सुनामी और ये एक्टिविटीज को आपको समझना है. ठीक है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी सेक्शन. ज्योग्राफी सेक्शन का जो फर्स्ट पेपर पे सिलेबस है ये सिलेबस है. बाकी डिटेल डिस्कशन या डिटेल में हम लोग क्लास में मिलेंगे. 20 तारीख को आपको आगाज बैच में मिलना है. ठीक है, यानी 20th ऑफ जून को शाम को 6 बजे आपको आगाज बैच का ठीक है, दिस इज द इंग्लिश मीडियम बैच. ये इंग्लिश मीडियम का बैच है जो कि आईएएस के लिए है. आप सभी लोगों को इस इवेंट पे जाकर के इसको लाइक कर देना है. इसी यूट्यूब चैनल पे बनाया और शाम को 6 बजे आपके सामने बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच. ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस. थैंक यू सो मच.